Namaskaram and a very good evening, all of you. Are we live? Hey everyone, hello. क्या हाल चाल है भाई? Good evening, good evening, good evening. मैम नहीं दिख रही, अभी दिख रही हूँ, अब दिख रही हूँ. Am I visible and audible? Are we live? Okay, I'll check at my end. I think we are live. I can see myself. Hey everyone, namaste. I'm good. What about you? अरे भाई मॉम जोन ही करते रहते हो तुम लोग. Hi, क्या हाल है? How's your prep going on? And are you guys taking mocks? Are you revising everything? Are you taking sectionals every day? Are you doing timed practice? Have you worked on how to rule out close options? Did you check out the NMAT video? Do you know that the NMAT SNAP and CAT forms are now out and you have to register yourself for all the three exams, or 2 out of 3 or 1 out of 3, whatever exams you're taking? I hope you know all of that. सिर्फ मेरे को लाइव देख के मज़े नहीं करने हैं, पढ़ाई करनी है ताकि मज़ेदार रिजल्ट भी आए. ठीक है ना? सो दैट आई कैन ऑल्सो probably interview you next year. Hello everyone. All right. So another day, another RC from the same year, 2021. We'll do one RC today. The RC that we are going to do today became very famous. The Cuttlefish Passage. Okay, it became very famous for the right reasons. We'll see today why is it famous. If you've not done it yet, then you will know it today. Why is it famous? And if you've done it, then you definitely know why is it famous. Okay. मार्क्स वही हैं, अगर ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं तो फिर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो और एनालिसिस के हिसाब से पढ़ाई नहीं कर रहे हो. ठीक. साइड ट्रैक्ट oof. All right, yeah, I have been trying to be regular, so let me just announce that NMAT forms are out. Okay, and so are SNAP forms, and so are CAT forms. Okay, I hope you also know that in NMAT only the first attempt marks will be considered by NMIMS. The remaining two attempts will not be considered by NMIMS. They might be considered by other colleges that take NMIMS course. Okay, that take NMATS course. SNAP is happening thrice this year instead of twice, and the best score will be considered. CAT will definitely happen only once, but in probably 3 slots, and 3 slots would somewhere mean that we are having a 2 hour paper again and not a 3 hour paper, which means 40 minutes per section. But anyway, we can't talk much about it officially unless we see the mock on the 27th of October. So yeah, let's wait, celebrate Diwali, and then after that we'll know exactly क्या करना है. ठीक. Good evening, walaikum assalam. Is NMAT worth it? Depends on your profile. If you have a single digit salary or if you're a fresher, then it is worth it. If you already have a salary of 8 to 10 lakhs or above, NMAT might not be a great choice for you, especially if you are 10 lakhs and above. Okay, so yeah, depends on the kind of profile you have. I have discussed the details of NMAT in another video. You can check that out on the channel, and we'll do a quick video on Snap as well very soon. Tonight we are going to do one RC, 4 questions, very easy, very quick. In case you have not joined our Telegram channel, you can join it. It goes by the name of VARC plus GK with Karishma. All right, and once you join it, you can practice questions from there. We are also posting some good articles to read. You can read articles from there. And of course, you will get updates about the YouTube videos whenever we go live, or even if we are doing a recorded session. You can also follow English Shots on Instagram and subscribe to English Shots on YouTube. Let's begin with the passage. I will post the passage on this channel as well, so you can refer to the passage on the channel and solve the questions on YouTube if you have 2 screens, which means a system and a phone. In case you have just one thing on your phone and you don't have a system, you can take screenshots while we are reading the passage so that you can open the gallery and check the passage. Okay, let's begin. सब कुछ included is 5600, 3000 plus 2600. They'll charge you another $1000 for GDPI. Parajumbles के लिए you can do the YouTube series on Parajumbles, or you can do the classes if you have access. I teach at IMS Noida and a few classes at IMS CP right now. That is my association. I can just read puppy eyes. Read the passage, chalo, hurry up.
क्यों इमेज क्लियर नहीं है? मेरे एंड पे तो क्लियर है भाई. इट्स एब्सोल्युटली क्लियर. नो बुक्स रिक्वायर्ड फॉर स्नैप. We'll talk about it, Kriti, in the end. Yes, I am available at the center. What is your name? I will not meet anyone who calls himself a minion. Has everybody read? चले आगे. Okay, have you taken screenshots so that you can come back to the passage when you want to solve questions? Hurry up, Adarsh. Awesome. We're going ahead. Dude, this is CAT 2021. Obviously, you can recall it. तुम सुनते नहीं हो ध्यान से. Are we done? चले आगे. Read the passage. Read the passage.
You want to be a cuttlefish because they have self control. And because no, Aditya is saying, ma'am, cuttlefish is better than you. At least they know how to control their weight. Thank you, baby. Yeah, this is just what I needed on a Saturday when I have ordered tandoori chicken. Thank you. All right, let's go ahead. Yes, okay. We have 4 questions. Okay, make 2 columns, pre-comprehension and post-comprehension, like we always do. So pre-comprehension is that you will first solve on your own and write your answers. Post-comprehension is when I will explain you the passage where it is difficult, answer your doubts, and then if you want to change your answers, you can change your answers. All right, and then we'll see whether the problem where we have gone wrong is because of comprehension, or because we've not understood the question, or because we've not understood the the options. Okay, I hope this is clear. Yes, okay. Question number 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर. Can we go ahead? आगे बढ़े. Question 2. Are we done? चलें आगे. Okay, let's go to question 3. कर लिया? Yes, let's go to the last question. Are we done? Are we done? Are we done? I think this was good enough time. Yep. Cool. Last question. Done?
Okay. Now I want you to write down in your notebook, not in the chat box, how many you think are correct attempts out of 4. So estimated correct attempts. Okay. And then we'll compare it with finally how many do you get correct out of 4. Alright, don't write it in the chat box. I said write it in your notebook and then compare. So maybe right now you think that 3 out of 4 are correct, you're sure about it, but later on you might find that only 2 were correct, which means in the exam you would have scored a -1 or -2. Okay. If you think that you're going to get only 2 correct but you get 3 correct, it means you're underestimating yourself and you might have left one question unattempted in the exam. So you need to check how judicious you are at choosing the questions in the exam. That's skill number 1. Skill number 2 is you will check कि एक्चुअली में जो सही हुआ है वो ठीक से ठीक हुआ है या फ्लूक से ठीक हुआ है, और जो गलत हुआ है तो वो क्यों गलत हुआ है. अब मुझे ये बताइए कि पैसेज में क्या समझना है. व्हाट इज इट इन द पैसेज दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, और यू वांट मी टू डिस्कस द एंटायर पैसेज. कम ऑन, हरी अप. पूरा पैसेज डिस्कस करें, थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करें, या कुछ भी डिस्कस नहीं करना, सीधा क्वेश्चंस पे चलें. विल डू व्हाट द मेजॉरिटी सेज. कम ऑन. इज द पैसेज क्लियर? डू आई नीड टू एक्सप्लेन अ सेंटेंस, a paragraph, a concept? Is the experiment clear to you? Is the experiment clear to you? Symbols wala paragraph. Okay. Short में ठीक है, तो short में करते हैं. Cuttlefish self control दिखाते हैं, इसके बारे में ये passage है, और उससे related एक experiment है. This is the gist of the passage. So we are talking about cuttlefish. I have pasted a picture for you so that you now have some clarity, right? और इसमें example दिया हुआ है कि एक marshmallow test हुआ करता था, बड़ा famous. Marshmallow test में साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिशेल ने ये टेस्ट किया था, और उन्होंने 4 to 6 years के बच्चों को मार्शमैलो दिखाया, और उसने बोला कि अगर आप 15 मिनट रुक जाते हो और उसको नहीं खाते हो तो 2 दूंगा, राइट? तो अभी या तो तुरंत खा लो तो 1 मिलेगा, या वेट कर लो तो 2 मिलेंगे. तो जो बच्चों ने वेट करा, जो बच्चों ने सेल्फ कंट्रोल रखा एक हायर रिवॉर्ड के चक्कर में, लाइफ में आगे जाके वो ज़्यादा सक्सेसफुल निकले. तो बेसिकली मार्शमैलो टेस्ट ये दिखाता है कि इफ़ यू हैव सेल्फ कंट्रोल, if you can wait for bigger rewards, if you can sacrifice little things for a bigger thing, then you're going to be more successful in life. If you indulge in instant gratification, you might miss out on the larger prize, the larger reward. You might fail to see the bigger picture in life. A similar experiment was conducted for cuttlefish. Now for cuttlefish, you can't tell them, cuttlefish, hi, hello friends, marshmallow खा लो. You can't do that. तो कटलफिश को ट्रेन करने के लिए 3 सिंबल्स बनाए गए. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल हेल्प अस आंसर क्वेश्चन नंबर 2. पहले तो ये समझ लो कि कटलफिश का मार्शमैलो क्या है. सो कटलफिश के पास 3 फूड चॉइसेस हैं. नंबर 1 फूड चॉइस इज लाइव ग्रास श्रिम्प. दिस इज द फर्स्ट फूड चॉइस जो उनको सबसे पसंद है. नंबर 2 रॉ प्रॉन्स, ठीक. और नंबर 3 इज योर लौकी, तुरई, भिंडी, करेला, या LTTPK, लौकी, टिंडा, तोरई, परवल, करेला. LTTPK is the terrorist group of vegetables. One of my mentors used to say. Yeah. तो इन लोगों का LTTPK, the terrorist group of food is Asian shore crab. हाथ ही नहीं लगाती है, नहीं खाएंगे, rejected. Okay. अब कुछ नहीं है तो ठीक है ना, मतलब मम्मी दाल ही दे दो. तो raw prawns. Okay. So. और सबसे फेवरेट फूड है लाइव ग्रास श्रिम्प. बेसिकली तुम लोगों के जीवन का जंक फूड. तो ये याद होना जरूरी है. श्रिम्प पहला चॉइस, रॉ प्रॉन्स दूसरा चॉइस, एशियन शोर क्रैब आज मेरा करवा चौथ है. ओके. फिर शेप्स दिखाए गए, क्योंकि हम इनको बोल नहीं सकते कि डूड तुम्हारे को वेट करने का लाइफ में, तो शेप से हमने ट्रेनिंग दी है. इन शेप से द कटल फिश कैन रिकॉग्नाइज दैट व्हाट फूड इज अवेलेबल व्हाट. सो नाउ द फिश आर ट्रेन्ड दैट इफ देयर इज अ डब्बा विच हैज अ सर्कल ऑन इट, इट मीन्स यू विल गेट इट इमीडिएटली. If there is a shape which is a triangle, it means you will get it, but after waiting for some time. There is a waiting list. Okay. And if there is a square, it means leak के बाहर है, नहीं मिलेगा. You will not get it. Okay. And all of this is pasted on a transparent drawer. So which means the cuttlefish can see that if I am waiting, what am I waiting for? If I am never getting this, what is it? And what is it that I will get immediately?
So you need to remember the food choices, and you also need to remember the shapes, because that will help you answer question number 2. But there is a but. It is not a good idea to reread and reread and reread and try to comprehend everything in the one go, in first go, while you're reading the passage, because anyway you will have to come back. Strategy समझिए. When you are reading the passage can be read in as low as 2 minutes or 2.5 minutes. What happens is that children get obsessed with, oh, there is a question on it, so I will reread it. Oh, this is difficult, so I will reread it and comprehend it, and spend a lot of time there. 2 minute के passage में 4 minute लगा दिए. When you go to the question, you eventually again have to come back to be sure. So what is the point of reading it extremely thoroughly? There is no point. So my suggestion in such a paragraph would be, try to read it once and get at least an 80% hang of things. Don't try to ratify details. You can come back to the details if there is a question and read it to the level which is required to solve the question, so that you save on time. ज़्यादा समझ के क्या करोगे? तुमको थोड़ा ही ना यूट्यूब लेना है या किसी को समझाना है, तुमको आंसर ठीक करने का है. So what level of comprehension you require can be decided after you've seen the question. I hope you get the strategy now. Okay? And then of course it says कि अगर self control flexible होता तो जो immediate reward है fish वही खा लेती. ठीक, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं. जब उनको पता था कि ट्रायंगल में कुछ उपलब्ध है, ट्रायंगल इज लाइव ग्रास श्रिम्प, देयर फेवरेट फूड इज अवेलेबल इफ दे वेट. द कटलफिश चोज टू वेट. दे सेड, ओ वील हैव अ बर्गर. वेटिंग है ना, वील वेट. सो व्हेन डू यू वेट outside a restaurant? Only when you like what is served at the restaurant, right? So that's what the fish is also doing. Okay, so this shows us that they had a choice to wait, so they waited for their favorite food, which means they had self control. And each time they could wait, the researchers tagged another 10 seconds. The fish were ready to wait for 130 seconds. 2 para jumble हो जाते, 1.5 तो हो ही जाता. 130 seconds is more than 2 minutes. The fish are waiting for more than 2 minutes to have their favorite food. Self-control, dude. Yeah, that's what the experiment is. And then of course it's winding up. It's saying another beautiful concept. ये खुद को distract कर लेते हैं. We've been talking a lot about focus. We know that Instagram is a distraction. We will turn off the notifications. Some of us will use focus mode, some of us will use DND, some of us will completely uninstall the app or deactivate the profile or fix a timing. You know that there is a distraction, you will not look at it. Yeah, a lot of people have uninstalled a lot of apps simply because they're serious for the exam. So this is the same. The fish is also saying, oh, I will not look at the food. It's easier to ignore it. Yeah, you remember the cookie example I taught you in the focus class? So if the cookie is right in front of you, then it's difficult to control. Don't look at the cookie. Don't buy cookies. Then it's easy to control. Okay, that's what it says. They keep away from distractions. Similarly, which is similar to humans, chimpanzees, parrots, and dogs, who can distract themselves because they know that they are waiting, and waiting becomes easier if you're not looking at it. Okay, cuttlefish are solitary creatures, whereas the researchers know that this self control का फंडा ये जिन स्पीशीज में विजिबल है, उनमें एक और बात कॉमन होती है कि वो सब लंबी लंबी सोशल लाइव्स जीते हैं. सो सेल्फ कंट्रोल अक्सर सोशल क्रीचर्स में देखा जाता है. दिस विल अगेन हेल्प यू सॉल्व अ क्वेश्चन. लेकिन कटल फिश इज #हक से सिंगल. वो सॉलिटरी ही रहती है. ना उनको मियाँ बीवी से मतलब है, ना उनको बच्चों से मतलब है. इनका निर्माण एकदम इनको प्राप्त है. तो अब अगले जन्म में कटल फिश बन जाए तो आप समझ लीजिएगा यही था जीवन का सार. किसी की ज़रूरत ही नहीं है. वी डोंट नो इफ लिविंग इन अ सोशल ग्रुप इज इम्पॉर्टेंट for complex cognition unless we also show those abilities are lacking in less social species. So it is said that self-control is a good idea for long social lives living वाला creature, but cuttlefish solitary creatures होने के बावजूद self-control दिखाते हैं. और हमको नहीं पता कि social group में रहना कितना important है इस level of complex knowledge के लिए, cognition के लिए. Cognition is related to your brain. I have taught you multiple times. तो हमें नहीं पता कि वो abilities lacking है less social species में या नहीं. Yeah, so you now know how cuttlefish are living. एकदम संत है. कबीरा खड़ा बाजार में, कटलफिश खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काऊ से दोस्ती न काऊ से वैर. आइए लाइव श्रिम्प खाते हैं. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1. I would call this an easy and doable question. This can be done in as less as 45 seconds if you've read the passage well, and you should be scoring a +3 here. That's my analysis. Okay, what is your answer? Hurry up. Come on, जल्दी बताओ. पहले वाले का आंसर बताओ. एकदम अच्छी फिश है. फिश इज गिविंग अस लाइफ गोल्स. वेरी गुड.
आंसर इज 1. कैन नॉट बी इन्फर्ड बताने का है. ओके और हम बाकी सारे इन्फर कर सकते हैं. कहाँ से क्या देखते हैं. ह्यूमन चिल्ड्रन के जैसे कटल फिश आर केपेबल ऑफ सेल्फ कंट्रोल. यस, यहाँ पर हमने मार्शमैलो टेस्ट किया था. ठीक, और यहाँ पर हमने श्रिम्प टेस्ट करा या जो भी आप इसे बोल सकते हैं किया है. ठीक, दोनों जगह सेल्फ कंट्रोल मिलता है. कटल फिश एक्सर्ट सेल्फ कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जन. यस, डिस्ट्रैक्शन वाला पैसेज. मुंह फेर लिया था किंग प्रॉन से, मत दिखाओ मुझे प्रॉन, मैं नहीं खाऊंगी. यार सो इट बिकम्स ईजी फॉर देम. हम भी यही करते हैं. मत आ यार, मत मिलते हैं तो फिर कुछ कुछ होता है, राइट. Cuttlefish exercise choice when it comes to food. Yes, you like junk. They like live shrimps. So they know what do they want to eat. Their taste buds are strong, okay? This can also be inferred. So ये भी infer कर सकते हैं, ये भी infer कर सकते हैं, ये भी infer कर सकते हैं. Odd man out is intelligence in a species is impossible without sociability. Last paragraph में लिखा है we don't know कि सोशल ग्रुप में रहना कितना इंपॉर्टेंट है इस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉग्निशन के लिए, और ये एबिलिटीज हैं भी या कमी है इनकी सोशल स्पीशीज में. सो इम्पॉसिबल कैसे बोल दिया भैया. कैन नॉट बी इन्फर्ड. ठीक है, क्लियर है, हो गए सब होशियार. इजी क्वेश्चन +3 आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो पिटाई होनी चाहिए. ठीक, एकदम. प्रायोरिटीज क्लियर है. वाई सेटल फॉर लेस इन लाइफ, राइट. सो व्हेन यू नो व्हेन यू कैन गेट गुड स्टफ, वेट कर लो. इसीलिए मैं कहती हूँ सिंगल रह लो, वेट करो, डेट करो, समय लगाओ, कमाओ, उसके बाद सेटल हो. ओके, ये नहीं कि मतलब अभी कूद गए तो HNN कंट्रोल में नहीं है. चलो क्वेश्चन नंबर 2. आई वुड कॉल दिस अ टफ क्वेश्चन सिंपली बिकॉज इट इज टाइम टेकिंग. हम मॉक एनालिसिस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है वो टफ है क्योंकि उससे हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं. ठीक, तो ये फर्स्ट वाले से टफ है. ओके, या बताइए, बताओ आंसर, बूझो तो जाने. ओके, हे मारा राम जी, एक लंगड़ो एक कहानी एकली मैं ही सियाणी, किस किसने संभाल लूँ. एलिमिनेशन नहीं लगाया. ओके श्रव्या, I am saying that this is time taking, this is why it is tougher. If you know how to eliminate, it's not a tough question. Tough does not mean non-doable. We are not in school and college anymore. Absolutely. You have to apply elimination. हमको बताना है कि सेल्फ कंट्रोल कहाँ लगाए. Which kind of question is this? This is an inference based question. ठीक. What kind of question is this? This is actually a question which is specified idea. At the same time, it is clubbing further application. क्योंकि ये पीछे जाके चेक करके स्पेसिफाइड आइडिया जैसे फर्दर अप्लाई करने को बोलता है उस नॉलेज को. ठीक, कैसे पता चलेगा कि टाइम टेकिंग, क्योंकि क्वेश्चन पढ़कर उसको बाहर निकाल कर करने में टाइम लगा तो टाइम टेकिंग. और कैसे पता चलता है. ठीक, प्लस क्वेश्चन का टाइप है फर्दर एप्लीकेशन. फर्दर एप्लीकेशन क्वेश्चंस आर यूजुअली टाइम टेकिंग. इतना पढ़ाए हम तुमको, तुम हमारा नाम डुबो रहे हो. लाइव ग्रास श्रिम्प आर रिलीज. फेवरेट फूड रिलीज हो गया है. 2 प्रॉन ड्रॉर्स लेबल्ड विद अ सर्कल एंड अ ट्रायंगल, यानी इमीडिएट और डिलेड, सामने रख दिए हैं. भाई जब तुमको बर्गर मिल गया है तो तुम दाल खाओगे, वो भी डिलेड. कोई सेंस है इस बात की. इन्हें बहुत लग रही है. एलिमिनेटेड. प्लेयर नंबर 4 एलिमिनेटेड. स्क्विड गेम. या ओ बाय द वे, कटल फिश एंड स्क्विड आर भाई भाई, तो अभी स्क्विड गेम कहीं ना कहीं यहाँ फिट भी हो रहा है. ठीक है, सो प्लेयर नंबर 4 एलिमिनेटेड. रॉ प्रॉन्स आर रिलीज्ड. सेकेंड फेवरेट फूड. while a live grass shrimp drawer फर्स्ट फेवरेट फूड. लेबल्ड विद अ स्क्वायर. स्क्वायर इज नेवर, मिलेगा ही नहीं. लीक के बाहर है तो जो मिल रही है उसी से निकाह रचाओगे ना. जो लीक के बाहर है वो तो हाँ बोलेगी नहीं, वो तो चवेंची के मोमोज खा रही है विद शेजवान सॉस. सो यू विल सेटल डाउन विद हुएवर यू हैव. तो इसमें सेल्फ कंट्रोल क्या है. ये तो तुम्हारी मतलब फूटी किस्मत है. जिसे तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं चाहता. प्लेयर नंबर 3 एलिमिनेटेड. ठीक, रॉ प्रॉन्स आर रिलीज. सेकेंड फेवरेट खाना. एशियन शोर क्रैब ड्रॉर, नहीं खाना, नहीं खाऊंगा. लेबल्ड विद अ ट्रायंगल, डिलेड. तुम सबसे घटिया खाने के लिए मेरे को वेट करवाओगे. कोई सेंस है इस बात की. प्लेयर नंबर 2 एलिमिनेटेड. 1 एशियन शोर क्रैब्स, गंदा खाना. रॉ प्रॉन्स सेकेंड फेवरेट खाना. दोनों को रिलीज कर दिया. दोनों अवेलेबल हैं, तो या तो करेले खा लो या दाल खा लो. ठीक है. लाइव ग्रास श्रिम्प, तुम्हारा बर्गर, उस पर लिखा है डिलेड. तो अगर बर्गर चाहिए तो दाल और करेला छोड़ना पड़ेगा. छोड़ेंगे ही आप, कैसी बातें कर रही है मतलब. आंसर इज 1. डुएबल बट
स्लाइटली मोर टाइम टेकिंग देन द फर्स्ट वन. तो +3 लाया जा सकता है अगर आप समय और सब्र की कीमत जानते हैं. सो +3, दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड इन अ मैक्सिमम ऑफ 90 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट. कम में कर लिया, शाबाश. तुक्का लगाया, पिटाई. 90 सेकेंड्स के अंदर करा, +3 लाया, वेरी गुड. ठीक, ऑल राइट, यस, ओके. सो एज यूजुअल, like Squid Game, player number 1 is the hero. Let's go ahead. What about this? Easy question again. +3, 60 seconds max. Easy. बताओ जल्दी. नो मुस्कान, यू विल हैव टू डिसाइड इन द एग्जाम की ट्रेड ऑफ क्या है. जब आरसी पढ़ ही लिया है और 2 क्वेश्चन ईजी हैं ही, तो बाकी के 2 को भी समय लगा के ठीक करेंगे. वी विल डिस्कस दिस इन द एंड. ओके, लेट्स बिगिन विथ 4. हमको ये बताना है कि ओरिजिनल और मॉडिफाइड वर्जन में पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, एक्सेप्ट, यानी एक ऐसा पॉइंट है जो डिफरेंस नहीं है. द फॉर्मर यूज्ड वर्बल कम्युनिकेशन विद द सब्जेक्ट्स. बच्चों को बोल दिया था यू कैन वेट फॉर मार्शमैलो. नंबर 2, the latter had to develop a symbolic means. We had to teach them shapes because cuttlefish don't understand Angrezi or Hindi or whatever we are speaking. So this is a difference, not the answer. Player number 4 eliminated. The former was performed over a longer time. You performed a marshmallow test on students, children who were 4 to 6 years of age, and then you saw how successful they are in life. It's a very long experiment. Cuttlefish is a food experiment. It's happening very quickly. So this is also a difference. The former had human subjects, the latter had cuttlefish. Of course, it's a difference. The former correlated self-control and future success, correct. The latter correlated self-control and survival advantage is incorrect. Where is survival advantage given in the question? It's not given. Out of scope, not mentioned. Factual error. It's not a difference. It's a factual error and therefore 1. Easy question. You should have scored +3. Maximum time taken 60, can be done in 45 if you're a bright student. Is that clear? और कोई दिक्कत? बड़े प्यार से ये 2 पुच्ची क्वेश्चंस 1 and 3 सॉल्व किए जा सकते थे. सेकेंड वाला भी डूएबल है, थोड़ा सा टाइम लगाना था, सब्र नहीं खोना था. स्किप करा है तो भी गलत है क्योंकि ये क्वेश्चन डूएबल है. नो स्किपिंग, नो नेगेटिव मार्किंग. दिस इज एन ईजी क्वेश्चन. यू मस्ट हैव, यू शुड हैव डन इट, यू कुड हैव डन इट. ओके, एलिमिनेशन तो करना ही है बेटा, उसके बिना वीआरसी कैसे होगा. लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझने वाला है. वाई नॉट सी कैसे होएगा? दिस इज अ डिफरेंस, राइट. चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट वॉज डन ओवर अ लॉन्गर टाइम. कटलफिश एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंस्टेंट, खाना खाने वाला. इट्स नॉट, इट्स अ डिफरेंस. हमें बताना है कौन सा डिफरेंस नहीं है. ओके, बताओ लास्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट द पैसेज इज फाइंडिंग. कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग देखिए, इंस्टाग्राम पे पढ़ा दिया मैंने कॉम्प्लीमेंट की दोनों स्पेलिंग. जाओ रील देखो. कॉम्प्लीमेंट आई वाला है तारीफ. दिस कॉम्प्लीमेंट इज एड्स. बोले तो स्ट्रेंथन्स. ओके, बोले तो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू व्हाट ऑप्शन विल सपोर्ट और स्ट्रेंथन. ओके, दैट्स द क्वेश्चन. ओके, हाँ, तो तुक्का लगाया है तो तुक्का नहीं लगाने का. आंसर बताओ. ओके, ओके, एनी अदर आंसर्स? ऑल राइट, व्हाट वुड यू मार्क इफ 3 इज नॉट द आंसर? व्हाट वुड यू मार्क इफ 3 इज नॉट द आंसर? व्हाट इज द सेकेंड बेस्ट आंसर? You'll still mark 3. Then you'll mark 2. Okay. All right. I am glad that you've ruled out 2 options nicely. Look at option number 1. Cuttlefish are equally fond of live grass shrimp and raw prawn. What does this option do? ये कहता है there is no food choice. I can eat dal as well as burger with the same sambhav. I am equanimous. So then the entire experiment is a failure. This fails the experiment. Fails the findings, because then everything is a facade. The experiment will crumble down like a house of cards. Fails the findings. Look at option number 4. Cuttlefish को geometrical shape का ही ज्ञान नहीं है. They don't know what is a circle, a triangle or a square. Squid Game again, by the way. Why am I getting these epiphanies of Squid Games today? Anyway,
So now that you cuttlefish cannot recognize the shapes, again this is failing the finding. It means that the entire experiment was bullshit. Okay, so 1 and 4 are negating the experiment or weakening the experiment. इतना क्लियर है? यस, क्योंकि ये दोनों प्रेमाइसिस को झूठा कर देते हैं. हाँ, तो अगर ये इफ ट्रू है भी, दे आर गोइंग अगेंस्ट द पैसेज. ऑल राइट, या ओके, लेट्स गो अहेड. नंबर 3, cuttlefish wait longer than 100 seconds for the shrimp drawer to open up. It is written in the passage that they wait for up to 130 seconds. Yes, this is given in the passage. Cuttlefish wait for longer than 100 seconds. So this is true. Okay, because this is a premise. This is given. So basically you are repeating the premise and saying that देखो मैंने strengthen कर लिया. It's like saying बताओ मैं अच्छी लग रही हूँ, मैम आप अच्छे लग रहे हो. ऐसे लड़कों को लड़कियां कभी हाँ नहीं बोलती हैं. जब भी तुमको तुम्हारी बंदी बोले कि बताओ मैं अच्छी लग रही हूँ, तो तुमको डिटेल पे ध्यान देना है. तुमको बोलना है आई लाइक दैट ब्लू आई लाइनर, आई ऑल्सो लाइक हाउ यू टाइड योर हेयर इन अ बन, आई रियली लाइक दैट ब्लू एंड ग्रीन कलर सूटिंग यू. अब करेगी बंदी हाँ. तुम उसी का प्रमाइज रिपीट करके सुना रहे हो उसे. कैसी बातें कर रहे हो, मतलब कभी हाँ नहीं करेगी. एकदम टेक नोट्स. हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट करना है तो कॉम्प्लीमेंट देना होएगा. बुझे है कि नहीं? तो थर्ड वाला इज जस्ट रिपीटिंग द प्रीमाइस. इट्स अ रेपिटेशन ऑफ द प्रीमाइस. ओके, यू हैव नॉट एडेड एनीथिंग टू द वुमन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, एकदम. हाँ, I know I'm being subtle and telling you that there is a blue eyeliner that I painstakingly applied, which you guys cannot see because I am online. But anyway, मैं आज offline पढ़ा के आई हूँ, तो देखने वालों ने देख लिया. Ish. Let's go to option number 2. Now this says cuttlefish live in big groups that exhibit sociability. ये कहता है cuttlefish बड़े बड़े ग्रुप में रहती हैं और वो ग्रुप्स में sociability दिखती है. पूरा का पूरा पैसेज क्या दिखा रहा था हमको? What was the passage saying? पैसेज में ऑथर कहते, एग्जामिनर ऑथर कहता है कि जहाँ पर सोशेबिलिटी है वहाँ पर ही सेल्फ कंट्रोल अक्सर देखने को मिलता है. दे गो टुगेदर. आई शुड नॉट राइट इक्वल टू, आई डोंट नो व्हाट साइन शुड आई मेक. लाइक दे गो टुगेदर. इफ देयर इज सेल्फ कंट्रोल, यूजुअली द स्पीशीज आर सोशेबल एंड लॉन्ग लिविंग क्रीचर्स. ठीक है, सो देन cuttlefish live in big groups that exhibit sociability. If this is true, then it strengthens the findings of the passage that self-control has something to do with sociability. It's given in the last paragraph. Let's read the last paragraph. It's a good question. ये देखो. Not every species can use self-control, but most of the animals that can share one thing in common, that they are long socially living creatures. We don't know if living in a social group is important for complex cognition like self-control, unless we show that these abilities are lacking in less social species. अभी cuttlefish अकेली रहती है फिर भी सेल्फ कंट्रोल दिखाती है. हम नहीं दिखा पाए कि उसमें ये नहीं है काबिलियत, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सोशल एबिलिटी के लिए ही ये होता है, सेल्फ कंट्रोल की क्वालिटी डेवलप होती है. तो अगर सेकेंड वाला सच हो जाता है तो रिसर्चर्स को मज़ा आ जाएगा, और जो लास्ट में वो अनसर्टेनिटी के टोन पे पैसेज एंड करते हैं वो सर्टेनिटी के टोन पे एंड होगा. ये है बढ़िया आंसर, और ये अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें नेगेटिव मार्क्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं. आई एम नॉट सरप्राइज्ड इफ यू डिड नॉट गेट दिस वन राइट. हाँ, तो इफ ट्रू विकास, इट सेज इफ ट्रू मीन्स यू हैव टू अज्यूम दिस टू बी ट्रू. स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग में बाहर के इन्फॉर्मेशन. Yes, same Shravya, I'm answering the same thing. This is why this question is a good question. Yes, I will repeat. It says which of the following if true, you will assume all the options to be true. सबको true मानने का है. This is a CR question. Yes, they are not sociable, but if they exhibit sociability, then the passages finding that self-control is associated with sociability will get confirmed. It will get complemented. This is why it's a tough question. It's a critical reasoning strengthening question. In a strengthening question, you have to consider all the options as true. And then you have to tell me what is strengthening the argument. One of them is a premise, the third one. The first and the fourth are weakening. The second one is adding to the findings that self-control has something to do with sociability.
We know that cuttlefish are not sociable, so the researchers are ending on a note that we don't know. If this comes out to be true and cuttlefish remember their partners and children, then the concept that self control and sociability have something to do with each other will get reinforced, it will get strengthened. Have you now understood? Shravya, Vikas, K. Ray, and everybody else who's been asking. So, Sakib, I hope now the reason is clear. Now tell me, how did you perform? And this is my analysis. Also, this is your homework. You will read this article as homework. Give me a black pen, bhaiya. Thank you, bhaiya. You will read this as homework. Take a screenshot very quickly. Type it in Google. Shabash, 4 out of 4 is amazing. If you've gotten 4 out of 4 or 3 out of 4, please check that your reasons for marking the answers were also correct. ऑप्शन शुरू में श्रिम के लिए भी रुकती है. हाँ रुकेगी ना, श्रिम के लिए तो रुकती है, वो उसका फेवरेट खाना है. 130 सेकेंड्स के लिए रुकती है. ओके, ऑल राइट. इज योर कॉम्प्रिहेंशन ऑन पॉइंट? हैव यू अंडरस्टूड द स्ट्रैटेजी? नाउ लिसन टू मी. 2 मिनट और बात करते हैं. ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टार्ट टाइपिंग. आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन नाउ दैट वी आर डन विद द पैसेज. ए, दिस इज योर होमवर्क. बी, पैसेज लेंथ वही है 525. सी, आई गेव यू अ टिप दैट when you get research based passages or something, there will be usually a question based on the same, but do not spend too much time in understanding it, because who knows the level of the question. So read it, vaguely understand kara 70-80%, come back to it later on, confirm it, and then mark the answer. Also, what would have been a good strategy in this passage? Now there are 2 questions which are doable, okay, and there are 2 questions which are slightly on the tougher side. Okay, it is not a good idea to read the entire passage and do only 2 questions and then score a -2 here. See, if you do 2 correct, you get 6, and then you do 2 incorrect, you will get 4. Or you do 2 questions and you leave the remaining, you're still getting 6. A better idea is spend 1 minute extra, because you've read the passage, right, and you've invested that time. Spend 1 to 2 minutes extra and convert this into doing at least 3 attempts. The 3 attempts will give you 9 marks, correct? Even if you go wrong with the 4th one, you're going to get an 8. If you don't go wrong with the 4th one, you are getting 9. So this is better than this, right? So what is the strategy here? The ideal strategy is 1.5 minute extra lagao. This is why I have given you 5 minutes for the question. I never give 5 minutes for 4 questions. The ideal time for 4 questions is on an average 3 to 4 minutes. But this is a passage where I am spending a minute extra to get good extra marks. You will be able to understand these calculations and all of this only if you are taking the mocks. So I hope you are taking good mocks, SimCats, or whatever mocks you've bought. And I hope you're investing enough time in analyzing them, going through your performance, going through how judicious am I? Am I solving the right questions? Am I marking the right answers? Am I in line with the explanation wherever I'm going right or wrong? And then you are studying accordingly. Dude, time is very less. We are in the middle of August. If you are not doing this detailed analysis and you're still solving BARC like लकीर का फकीर, A नहीं है B है, अच्छा ओके, तो फिर नंबर ना ओके नहीं आने वाले. तो 75% एक्यूरेसी से 100% एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो वक्त लगाओगे. इफ यू वांट टू डू दिस, you want to do 2 questions and go ahead, the time taken in this passage should be as low as 3.5 minutes total. Then I can give you 2 मिनट में पैसेज पढ़ा, 1.5 मिनट में 2 क्वेश्चन करे, आगे बढ़े. अगर तुमने 3.5 मिनट से ज़्यादा लगाए हैं तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ठीक करो. आई होप दिस इज़ क्लियर. हाउ कांट यू फाइंड द जॉनरा? वी आर टॉकिंग अबाउट फिश. फिश इज साइंस बेबी. कैसी बात करते हो? ठीक, ऑल राइट. ईजी एंड डिफ़िकल्ट इज़ रिलेटिव. मैंने अपना एनालिसिस बता दिया है. कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे पैसेजेस ज़्यादा सॉल्व करो. Taking a look at the question first is a good idea, Adarsh. Reading nahi, just taking a look that what is the question about, what is the kind of question. No, Kriti, you don't need to retype it. For inference-based question, you can revise the inference-based class and do lots of practice. Solve RC99, RC100, SimCats, AIMCats, Purane mocks. Just keep solving and keep reading the explanations wherever you're going wrong. Okay? How are the new students? Let's just say that some of those new students are live right now with me. All right. Which is okay, Ishika.
1 out of 4 passages in the exam might turn out to be from that category, but not all passages will be from that category. You can still do 3 out of 4 RCs. Right now, whatever RCs bother you in comprehension, you can watch videos about the same. You can watch my eclectic reading sessions. You can watch RC Genres course if you have access to older subscriptions. You can, increase your knowledge related to the topic, read a little about it so that your comprehension goes up. Okay. You end up marking the second best answer. You need to know how to mark the best answer by coming to these practice sessions, see how the teacher is solving, solve it with me. And also you should go through my sessions like how to rule out close options. मॉक और बैकलॉग में फ्रस्ट्रेशन, डूड, फ्रस्ट्रेशन का टाइम नहीं है, डिमोटिवेशन का टाइम नहीं है. इस टाइम पे you are running the second last lap of the race. If you now get demotivated, if you now get frustrated, if you now get tired, you are losing. So if you're ready to lose, you give up. If you don't want to lose, you have to keep going. Okay? ये किस्मत पाने के लिए क्या करना पड़ता है? मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठी हूँ, ये भी किस्मत है. और मैंने तुम्हें जितना पढ़ाया शायद मैं ऑफलाइन उतना नहीं पढ़ाऊँगी, एटलीस्ट इस साल तो नहीं. उन बेचारों की 10 क्लास लगी है मेरे साथ इस महीने. Accuracy will increase only when you increase read explanations, see where you're going wrong, and then work on your comprehension and then mark the right answer. Then you can work on your speed. Shravya, yeah, please tell the offline students that they are lucky to have me. Thank you. बोल दीजिए कैसे हैं नए बच्चे, हम जैसे तो नहीं होंगे, मतलब बेसिकली फ्लर्ट नहीं करते होंगे, तो बेटा मेरे सामने खड़े होकर फ्लर्ट तुम भी नहीं कर पाओगे. ओके. We will do para jumbles also. Let's do RC first, then we'll do para jumbles. I am overwhelmed that you guys are still missing me. You've not moved on. I like that. I thought you will move on, but you haven't. Makes me happy. Which is nice. I'm glad that you're enjoying the recordings. All right. So love to all of you as well. I hope that you are enjoying the session, and I hope that the sessions are a value addition. That's the main agenda. If the sessions are useful, please like, subscribe, comment, and share. You know I am bad at marketing, so yeah, that's it. I'll see you very soon with another session. I will also post a session on Snap. Okay? Yeah. Please don't move on. See, I haven't moved on either. Yeah, I am here with you. I have not left you. Okay? Alright, so we'll see each other very soon. Till then, take good care of yourselves. जम के पढ़ाई करने का, फॉर्म्स भरने का, और खुश रहने का और enjoy करने का. क्या पता कल हो न हो. Alright, take care of yourselves. Have a good night.